When medu vada fries, you know, in the pot, my heart. Oh, I love medu vada. Good afternoon, guys. Welcome back to another vlog, another day. Like we always say. काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे साउथ इंडिया के, स्पेशली कर्नाटका से जो हैं, वो लोग हमें बोल रहे थे कि भैया MTR रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है बेंगलुरु में, वो लंदन में भी खुल गया है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके वहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आ गए हैं हम हैरो में at MTR restaurant to try their delicious food. I've heard really good things about it. When it comes to Masala Dosa, because this is very important part because I need my potatoes. So when it comes to potatoes, when it comes to Masala Dosa, I'm always excited. And the moment you told me at home like, you wanna have some Masala Dosa, I was like, yeah, you don't have to ask me. So I'm so happy to be here. Let's go inside, let's try their food, and I hope they will give us like lots of potato inside, but whatever, I'm just already dreaming about it. Yeah. But anyway guys, before we start and take you inside, if you're new to the channel, don't forget to like, share and subscribe. Chalo. चलो भाई चलो। देख रहे हो भाई क्या भीड़ है अंदर, देख रहे हो भाई, मैंने आज तक कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। फॉर द नॉर्थ इंडियन पीपल, क्योंकि हमारे दिल्ली में इतने लोगों को तो पता नहीं है MTR के बारे में। आई थिंक दिस इज मोर अ बेंगलुरु और अ कर्नाटक थिंग। आई थिंक दिल्ली में भी आप लोगों ने MTR के वो रेडी टू गो फूड मील्स देखी होंगी। सो दैट इज द सेम काइंड ऑफ ब्रांड, इट्स द सेम कंपनी। आई थिंक दो देव स्प्लिट इनटू टू नाउ, but the restaurants are still managed by family. Started in 1924. I think three brothers. They were three brothers that created this brand. One of the brothers later on he traveled to Europe to check other restaurants and see what the stuff is in terms of hygiene, quality, and he brought back all that experience and kind of used it in his restaurants. I think it's one of the very few restaurants at that time that was sterilizing their utensils and stuff. And I've heard the sambar is to die for. तो मुंह में पानी आ रहा है। ये फूड रिव्यू ना मेरे से होते नहीं है ज़्यादा। आई एम मोर इनटू जस्ट ईटिंग इट। रिव्यू क्या देना भाई? Mouth is watering already. Just thinking about it. खुशबू आ रही है ना, वो जो सेसमी, वो क्या बोलते हैं, वो मस्टर्ड सीड स्मेल। Oh, this potato. जो पहली धार का पड़ता है ना आलू पे। And this chutneys. I love this chutneys. चलो भाई, वेट करते हैं। I got mustard. Class again, I'm so surprised क्योंकि usually दिन दहाड़े तो इतना crowd नहीं होता है लंदन में, तो this is a very pleasant surprise. Basically ये जगह है जहाँ पे रवा इडली जहाँ भी आप देखोगे वो MTR ने ही इन्वेंट की है। Fascinating. मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था भाई इस बारे में। I'm just thinking what we're going to have because I thought we'll be having like sharing things, and now you're saying that they are small portions. So शेयर वेयर नहीं करना मैंने। I don't want to sharing share. doesn't work. ना। ठीक है। एक चीज, हर चीज एक ले रहे हैं। Okay, masala dosa for me. The rest you can organize your way. चलो ठीक है। Ghee inside the dosa and coriander chutney we put inside. And benne masala, so benne means butter. So that's why we put the butter inside the dosa, and we put a mint chutney inside the dosa. Okay. And fluffy inside and crispy outside. So let's do one of this and one of this then. Yeah, that's fine. I got mustard. I got mustard. And it's alright. Okay, Bhaiya is making medu vada, yeah? Yes, medu vada. When medu vada fries, in the pot, my heart. Oh, I love medu vada. किचन दिखा रहे थे अपना, इतना क्लीन एंड as again when they say hygiene पे ध्यान देना, everything like proper clean, proper organized. खाना भी आ गया है। Yay! Oh, it smells very nice. You like this? Smells like a proper meal. अरे पी लेना मेरी माँ। Oh, it's lovely. Yeah? It tastes like. This is authentic filter coffee. It's actually reminding me about my grandparents. Really? Because they used to drink similar coffee. Yeah? Yeah. I will give it to you in Poland. We have one coffee that tastes very similar. Rava idli. Yeah.
bisivela rice, masala dosa, Yeah. benne masala, Okay. and pineapple bisivela. That looks amazing. That looks tempting. Thank you. Fresh pineapple inside. All right. Okay. Thank you. Taste it now. Thank you. So let's start with रवा इडली जो यहाँ का इन्वेंशन है. Jehreela लग रहा है. Nuts. This is probably nuts and some herbs, and I think this is Coriander. yeah. मुझे पता था you will like it. It's nice, isn't it? It's so nice. That tastes a little bit like couscous. Yeah. भाई मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ. Oh. It's light and it's got good flavors, like subtle flavors to it. It's very good, this one. So this is the... This is my favorite. भाई कैसे टूट रहा है भाई. This is मेदू वड़ा. Take your time. You have tried this before, na? Yeah. Now try it. Because usually when it's when we eat it in Delhi, it's kept for a very long time. भाई दिल्ली में क्या होता है जब मेदू बड़ा है ना, यूजुअली पहले से प्री प्रिपेयर करते हैं सुबह सुबह और फिर बाद में बेचते हैं, तो इतना हार्ड जाता है. दो उसका भी टेस्ट ठीक ठाक आता है, बट गर्मा गर्म तेल में उबला हुआ और निकला बाहर, और दैट टेस्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो सिल्विया जी इज ट्राइंग नाउ बीसी बेले भात. ये आई हैव आल्सो नॉट हैड इट एवर. Wow, you love it. It's very soft. Is it similar to khichdi? Little bit. Okay. Little bit. It's little bit. Okay. भाई खिचड़ी जैसी इसकी लुक्स है, बट आई थिंक भैया ऑल्सो सेड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. तो let me see. It's got that South Indian, that खट्टानस, tanginess है इसके अंदर वो. Oh, it's nice. Yeah, it's very similar to खिचड़ी, but जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं दिल्ली में वैसा ही टेस्ट है, बट लेकिन वो सांबर का जो फ्लेवर है वो आ रहा है इसमें. Their सांबर is to die for. This is probably the best sambar I've ever tasted. खटास है एक सांबर में और स्पाइसीनेस है. एंड द कंसिस्टेंसी इट्स वेरी क्रीमी. यूजुअली सांबर बहुत पतले होते हैं जो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते. ये तो दिस इज आर्ट. सिल्वी, ये तो आर्ट है यार. ग्लेज देखो क्या है यार, क्या बना है भाई. ओफो भाई साहब, क्या डसा है यार. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. आलू ही गिर गया मेरा. It was a very messy approach. It was very nice. All right, very nice. That is different because this one has butter inside. This is class apart. Let me try it then. You can't even compare it. Yeah. Look at the potato. Is it good? Oh my god, it's lovely. This one's with ghee. I think this one is with ghee. Oh, हाँ. Oh, wow. भाइयों बहनों, मुझे पैसे नहीं दिए गए यहाँ से बोलने के लिए ऐसा. We just found it and we are coming. जो लोग लंदन आ रहे हैं साउथ इंडियन खाने, वेम्बली मत जाना. ये रेस्टोरेंट पे जाओ, पागल हो जाओगे भाई. स्पेशली पीपल हु हैव एक्चुअली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु आर कमिंग, और जिन्होंने साउथ इंडिया का ज़्यादा खाना नहीं खाया है. घी है, प्योर घी. दिस लुक्स लाइक अ हलवा, लाइक सूजी का हलवा वी हैव, द सेमोलिना. इट लुक्स द सेम. आई मीन वही है. आई थिंक इट्स दैट ओनली. But with pineapple, that's such an interesting combo. चल खा ले. It's not too sweet. Sometimes, the Indian sweets are
Very Crazy sweet. killer, yeah. Oh wow. It's exactly like how we have सूजी का हलवा. But it's obviously केसर डला हुआ है, फ्रूट्स डले हुए हैं और पाइनएप्पल का. There's one subtle flavor, like aftertaste पाइनएप्पल का आ रहा है. It's very nice. Again something very unique. सूजी का हलवा we've eaten. In Delhi also we eat. But ऐसा combination पाइनएप्पल के साथ, ओह मज़ा आ गया भाई. सिल्विया को नशा हो गया लग रहा है. Now, So full. yes, now I need to lie down. Now I actually understand Indian people why they always sleep. चले, shall we roll? Thank you so much, guys. Amazing food, yeah. Thank you. Silk. Beautiful. Okay. Thank you. What's your name? Ruchi. Amazing. No, Ramita Rai. Ramita Rai. Thank you, guys. काफी जोकीले शेफ है भाई इन लोगों के. मस्त जगह है यार, बहुत अमेजिंग जगह. Thank you. नशा ये सांबर का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, सांबर में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो. भाई मैं तो कोमा में चला गया हूँ. माँ कसम से ऐसा खाना तो मैंने भाई अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया भैया. मतलब दिल्ली में भी भाई इतने सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ऐसा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तो मतलब कमाल है भाई. अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई इतना, क्योंकि बेंगलोर के काफ़ी आई थिंक सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि भाई ये ट्राई ज़रूर करना. अब समझ में आता है भाई कि क्या जहरीला खाना है भाई. I would food coma. वाह कसम. Now I'm a little bit like in this dreamy state that I want to lie down Yeah. and let the food settle in my tummy. But it was yummy, guys. It was yummy. तो चलो भाई, आई होप कि आपको आज का खाने का व्लॉग अच्छा लगा. मुझे तो लग रहा है हम लोग फूड ब्लॉगर बन गए. आई थिंक इसलिए जहाँ भी जाते हैं खाना, भाई देखो खाना इज़ द फंडामेंटल थिंग. हर इंसान कहीं भी जाए, ट्रैवल भी करोगे तो खाना तो खाओगे ही ना. तो हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं. बट एज अगेन होप करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा. जो लोग चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. और बस मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में. Bus. समथिंग यू वांट टू ऐड? बस हो गया. सिल्विया का हो गया. मुझे लगता है सिल्विया की भी आज आत्मा ना तृप्त हो गई है. यू ऑल्सो फील लाइक योर पर्पस इन लाइफ इज डन ऑलरेडी.